we are going to welcome Satyapal Singh Baghel, who is amongst us and he is going to speak in this session. I would also like to call our speakers and of course the chair session person, Mr. Surendranath Tripathi. Mr. Surendranath Tripathi, IAS, retired as an IAS officer of 1985 batch, Odisha cadre, and MA in Political Science from Allahabad University and MBA in Public Policy from Slovenia. Mr. Tripathi is a highly seasoned civil servant with true academic flavor. He took over the charge of Director General IIPA in April 2019 while he was still holding the charge of Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs, Government of India. Let's put our hands together and welcome our session chair, Mr. Surendranath Tripathi. तालियों के साथ स्वागत करते हैं everybody. I would like to call our next speaker for the session, Mr. Shekhar Singh, IAS, is an alumni of IIT Guwahati and a postgraduate in structural engineering from the University of California. He cleared the Union Public Service Commission in 2011. Currently, he is the Commissioner of Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation and CEO of Pimpri-Chinchwad Smart City Corporation Limited. With a huge round of applause, let's have Mr. Shekhar Singh. Also, we have our next speaker, Pushyamitri Bhargav. Mr. Pushyamitri Bhargav is an incumbent mayor of Indore city of Madhya Pradesh. Mr. Bhargav was brought up in Indore, Madhya Pradesh, and has done a declaration course in journalism and mass communication from Allahabad University. Ladies and gentlemen, let's give it up and welcome Mr. Bhargav as one of our speakers. Let's call our next speaker, Mr. Junaid Asim Mattu. Mr. Junaid Asim Mattu is a mayor of Srinagar, currently serving his second successive term as the longest serving mayor of the capital city of Jammu and Kashmir. A former financial analyst and economist, Junaid Asim Mattu is an alumni of the AIILSG Board College of Business, Michigan. Permanent residency in 2010 and returned to India to work with grassroots level in Srinagar to effect change. Ladies and gentlemen, let's give it up as we have Mr. Mattu amongst us as one of the speaker. To proceed further, let's have our sixth speaker, Dr. Sanjay Kolte. IAS spent the initial 23 years of his service in various capacities as a revenue officer in state government, and during his tenure, he worked in various districts of Maharashtra like Jalgaon, Nasik, Dhule, Mumbai and Pune. Let's put our hands together for Mr. Kolte. We also have Sunaina Prakash. Miss Sunaina Prakash is an independent director of the Ministry of Chemical and Fertilizers. She is a social entrepreneur and a lawyer, Supreme Court Bar Association member. Miss Sunaina Prakash has been appearing on many news channels on various topics and has been closely working with a lot of well-known people internationally from the field of music, film, sports and intellectuals. Let's put our hands together for Miss Sunaina. We also have Ms. Debjani Ghosh, is a social scientist with masters and PhD in planning with over 20 years of professional experience in the field of development planning. Presently working as an associate professor, National Institute of Urban Affairs, New Delhi. She leads the projects related to sustainable urbanization, capacity building and data-driven decision making. Well, I would like to request Ravi sir to please join us and Hansa ma'am and felicitate our Mr. Jairaj and also Jairaj Pathak sir to felicitate Ladies and gentlemen, let's put our hands together as we felicitate Mr. Baghel, who is amongst us, to grace this event and also one of the speaker of this session. एक बार जोर से तालियां हो जाएं everybody. Wait. Sir, wait 1 second. Thank you, sir. And now I would like to hand over to Mr. Tripathi to begin the session.
technical session number 3, India's urban transformation, opportunities and challenges. Good afternoon, friends. Session 3, post-lunch, after 2 jam-packed, intellectually stimulating session, becomes fairly difficult. But I am happy that we have none other than Professor S.P. Singh Baghel, Honorable Minister, State, Law and Justice, Government of India, to address us. Since we are late, without further ado, may I take the privilege of requesting Honorable Minister to speak first. Sir, over to you, sir. Sorry. I was told that the special address is at the beginning. Maybe I beg excuse from each one of you. Friends, urban transportation is not something new which we are not aware of it. But I am sure that we all have mismanaged during our tenure wherever we got a chance to manage it. I am one of those who believe that urban conglomeration started as a marketplace first. Sooner it became place of manufacturing, and slowly with immigration and migration and people shifting as a labor and intellectual labor, it became a place for habitation also. Today the time has come to think this transportation as a different thing, as a solution which emerges from the land use, planning, technology and many more issues. In India, we all are aware that in 1986, the urban transportation was managed by either rail or road, rail by Ministry of Railway, road by Ministry of Road, and urban was not even involved. In 1996, there was a rethink, and by 2006, when the first new urban transportation policy came, for the first time we realized that urban transportation should be managed by Ministry of Housing and Urban Affairs, and neither by rail nor by road. We all are aware that Calcutta Metro, when it started with Ministry of Railway, whereas later on metros got shifted and managed in a very different way. Today we have very different issues at our hand. Urban planning, which is once in a 5-year, 10 or 15-year affair, but urban management is day-to-day affair. The urban managers need to be equipped to manage any issue, including urban transportation. Today we are lucky that we have got a galaxy of speakers to share their views. Without further ado, may I take the privilege of requesting Sri Shekhar Singh ji to speak first, and he should share his observation on India's urban transformation, including his own and the city that he has managed in the past. Over to you, Mr. Shekhar Singh. Respected Minister Sir, members on the dais, all dear audience, thanks to Tripathi Sir for giving me a rather difficult task. I am not here today with any presentation after a rather heavy technical session. I'm just going to quickly speak about what my observations have been for managing city Pimpri Chinchwad. It's a twin city of Pune. It's roughly a population of about 31 lakh. Total Pune urban agglomerate is almost about 90 lakh or 9 million, so to say. And the kind of challenges that we face regularly in the cities in India, there are a few broad themes that I would like to speak today. First and foremost is about the expectation of the people. And by expectation, I mean that there used to be a time when, if I could use the word, there was a bit of a Stockholm syndrome where the people generally used to feel that if a public service delivery is not up to the mark or is not perfect, that is how it's supposed to be. Just to give a small example, potholes in the road or XYZ other things. But currently, the way that we see the expectations of the people, they match up to the best standards in the world. And the best standards in the world is very, very evident from social media, is very evident from your next Instagram reel, is very evident from your Facebook, to all other things. And especially the young people in the city, and in especially a young city like Pimpri Chinchwad, where the majority young population that we have is all IT people working in IT industries, the level of service or the level of expectation that they have from the municipal corporation matches the international standard.
While meeting these expectations, there are always a bit of a conflict, and I'm coming from a little bit of a generalist point of view. I'm not going into the specific technical details in whatever I need. I'm speaking with you. There are a lot of conflicts that exist for any urban manager or any city administrator or any municipal commissioner for that matter any mayor as well. There is always a conflict between the social classes that exist. So whether I provide the infrastructure for a socio-economic strata which is lower down, so to say, on the economic scale, or lower up or up in the economic scale. Just to give you a classic example, there has been a lot of conflict in our city when we went out to make pedestrian walkways and cycling tracks. Pimpri-Chinchwad currently has amongst the largest network of cycling tracks in India, but the vehicle drivers are up in arms against with the municipal corporation, saying that the space for the vehicles is reducing, all the while neglecting the fact that a person who is walking on foot, a person who is cycling to work, is also someone who needs a fair bit share of the road, a fair bit share of the street. So these are the kind of conflicts I think that we face on a day-to-day basis. Another conflict that we often face is a challenge or a choice between a hard infrastructure versus a soft infrastructure. And so much of our time as municipal commissioners most often goes into preparing for the hard infrastructure, whether it's with regards to the roads, flyovers, bridges, etc. At the same time, we do forget sometimes about the social capital, the cultural part of the city, the soft component of the city, which also includes a lot of vulnerable communities, right from third gender people to transgender to even gender issues in the various policies that we implement, to even vulnerable communities. For example, say Pardi community in Maharashtra, which is a very crucial part of the entire urban landscape, but is more often than not quite neglected. So this is the kind of conflict that we face as urban managers. Apart from it, one very emerging thing which was a predominant theme of the last session as well is the sustainability debate. Now even in sustainability debate, I think the choice is not very easy for the cities. The choice is always to go for a project which would be sustainable in the future but would have a higher capex cost as of now today. And the choice is not very easy, whether to make do with my short-term needs that the city has, which a lot of time is also governed by the local scenario, the local demographics, the local politics, but is also governed by a very, very short, urgent local need, versus a long-term need of the city which might need to be taken care of, but which eventually becomes a bit of an issue. So environment and sustainability are coming as a very, very major theme in everything that I do. So whether it's a tertiary reuse of water, whether it's my waste management, whether it's river rejuvenation project, whether it's NCAP program of the government with regards to reducing of the pollution. Also taking everyone along, I've already mentioned, I think that is also another conflict that we as city managers often face. Another predominant theme that is now coming across that I increasingly see, and I keep giving this example, I would repeat it again today, is with regards to, for example, smart city. I often keep hearing our local media, a lot of times people also saying, what's the use of a smart city if there are potholes in the road? What's the use of the smart city if the drainage cannot be proper? And it's a continuous fight. Given the fact that we have growing cities, PCMC is expanded from 17 lakh population, 1.7 million to about 3.1 million today, and it is growing rapidly. So we always have growing areas versus already established areas where the problems of roads, drainage, in a perceptible future is going to be there. But at the same time, we also need to take care of concepts like smart city, and smart city really brought forth a paradigm shift in the way that we envisage data. So we can't really compare the two. There was, on a lighter note, a recent series on OTT called Rocket Boys, where we saw a whole debate with regards to going into the space versus feeding ourselves. So that debate has always been there, and that debate is still there, where people say, why do you need to invest for smart infra when the basic infra is not done? But then this is a choice that we need to take. We need to create basic infra as well, and we need to start creating smart infra as well, which Smart City has really taught us how to do it. Data gathering, data analytics is again coming up as a very, very important theme. Quite often our government data, say in India, is amongst the best in the world also. Say census data, NFHS4 data, we can very proudly say it's amongst the best fiddle data in the world. But a lot of times, or sometimes, the data that we have is also garbage in, garbage out. What Smart City really taught us
in a sort of a mission mode or in a sort of a pilot, if I can use the word, is how data can be collected smartly, how data can be collected automatically, how there need not be a human intervention in collection of the data. For example, in the Pimpri-Chinchwad Smart City, we had a project with regards to water quality analyzers or sewage quality analyzers. Earlier, we used to collect sample from the water treatment plants or sewage treatment plants, and then there was a human intervention. Currently, the data that we are collecting is all automatic. Meaning to say that the kind of data collection that is now happening is without any human intervention. But then it all depends on how we use that data. If the data dump is just lying in my ICCC without any analysis, it's not going to work out for me. But as and when the data starts becoming a decision matrix for me in trying to cross-reference various data, trying to cross-reference data across the departments, is where I can really leverage the power of the data. And we often keep hearing about big data and metadata, etc. We are just beginning to use that, but it is coming up very, very rapidly. And that leveraging that we are trying to do is also through a lot of startups which are there. Smart City again has been a really good initiative in trying to start or in trying to give a push to those startups in becoming a part of solving the problems of the city, where we float the problems, and we've had startups coming up to us and telling us problems. For example, hyacinth in our rivers. For example, the parking problem. So currently the parking app that I have in my city and the parking solution that we have in the city is very much run by a startup which was incubated by the city only. So these are the themes which are really coming up, but with the increased expectation, I said, the propensity is still, at least in our country, or the way that I see, for people to start believing in paying a user fee is still not to that extent. And that creates a bit of a stress for the municipal corporations in terms of the finances that we have. For example, I still remember 10 to 12 years back when the toll started on the national highways. In many rural areas, people didn't understand why they had to pay to use a good road. But slowly and gradually that habit came into being. Currently, we are up in arms against with our residential societies in trying to explain them why we are charging them for the waste processing, which is something that Government of India mandates, but we are having to deal and negotiate that with our residential societies. We are still not charging our people in our city for sewerage, but very soon we need to start charging them for sewage as well. Water user charges is well set, but we are in a situation, a tricky bit of situation, where the city residents demand services which are of the world standard, but are still not ready to pay for those services. And that is a graph that would come either gradually or little rapidly, but that's a graph that there's no switch on, switch off button. And just finally, the one theme that I just wanted to say is about financing and alternate financing. Now, there's a lot of things that were said in the last session. We had a representative from IFC. We are almost nearing, we've started talks with the IFC, trying to see how we can build a relationship with IFC, not just in PPP projects, but in terms of private financing also. A lot of cities in India have gone for municipal bonds, almost about 10 to 12 cities, and PCMC is coming out with its municipal bond just this very month, and that is for the river rejuvenation project. But there's a basic issue with regards to municipal bonds, and I would really request AIILSG also to probably pitch for that in terms of from the city sides. The municipalities or the municipal corporations still are considered at par with the private corporations, and I think that is a very, very faulty sort of a apple and oranges comparison that we keep doing. Municipal bond in US is a $3.2 trillion economy, versus in India where only about 10 to 11 cities have been able to come up municipal bonds, and no city has repeated a municipal bond, which is to say that the entire ecosystem needs bit of a tweaking. The entire ecosystem needs much more of a motivation for the cities to come up with these municipal bonds, because the kind of big ticket size project that we are talking about, especially in a city like PCMC, runs into 300 crore, 500 crore to even 1,000 crore projects for river rejuvenation, for example. And if I need to keep funding these projects going forward, municipal budget cannot be the end of it. So we need to go for alternate financing with regards to municipal bonds, with regards to multilateral institutions like World Bank, JICA, ADB, IFC, with regards to PPP projects which are self-funded or where we can have a revenue stream. And now finally, as are coming up, Indore came out with, we have Mayor of Indore also, Indore came up with the green bond, which was the second green bond in India. Ghaziabad was the first one. And increasingly, corporations are moving towards sustainability linked finance, which merges both the aspects of sustainability and also of the need for municipal financing. But going forward, this entire conflict between
A, having to provide for the best facilities, and B, trying to gather the resources for that is something that we as administrators go through daily. And that also creates a stress with regards to the short-term needs and the long-term needs, and with regards to the need that the city wants to have 10 years later, 20 years later, versus the immediate needs of the people, of the councillors, with regards to road being built, with regards to other things being built. So that is just my 2 pennies from my side with regards to city administrator. Thank you so much. Thank you, Sekharji. You covered a lot of issues, but I would not like to sum it up because of paucity of time. Maybe may I request to share the use case of Indore's transformation through SBM and value chain. We have the privilege of having the mayor of Indore, Mr. Pushpamitra Bhargava. May I request him to share his views? So time is 7 to 8 minutes as you feel like. 7 to 8. Yeah. 10 minutes is too late for Indore to describe the success story as far as the value chain is concerned. Mattu, you will be nice. The dignitaries on the dais, delegates from India and the other countries. Recently, the Honorable Prime Minister was in Indore for Pravasi Bharati Sammelan. And during his speech, he said, Indore ek daur hai. And explaining this word, he said कि इंदौर एक दौर इसलिए है कि जब देश भर में किसी अच्छे काम को करने के बारे में हम लोग सोचते हैं, तब तक इंदौर वो काम कर चुका होता है. And the success story of Indore is all based upon the public participation. इंदौर की स्टोरी जन भागीदारी की स्टोरी है, पब्लिक पार्टिसिपेशन की स्टोरी है. 2015, जिसके पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब गंगा घाट से कहा कि हम स्वच्छ भारत मिशन लेकर आएंगे और पूरे भारत को स्वच्छ करेंगे, तब मैंने ज़रूर ये सोचा था कि ये इतना कठिन काम सबसे पहले लिया, लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि जब तक घर आंगन और हमारा आसपास स्वच्छ नहीं होगा, तब तक किसी भी प्रकार का विकास, डेवलपमेंट वो अधूरा है. एंड इंदौर टुक इट एज अ चैलेंज. इन 2015 वी हैड मोर देन 2000 प्लेसेस जहां कचरा एक ही जगह पर इकट्ठा हुआ करता था. इन 2016 वी वर एट 47. फ्रॉम 2017 to 2022 we are the cleanest city of India. Last 6 years, Indore is the cleanest city. We are the only city with a source segregation into 6 different parts. इस चैलेंज को लेकर डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, 10 अलग बड़े गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन और जो 15 लाख टन का लेगेसी वेस्ट था, उसको बायो रेमिडिएशन से एक सुंदर बगीचे में बदलने का काम हमने किया. और ये सब संभव हुआ जन भागीदारी से. ये स्वच्छता का जो मॉडल इंदौर ने देश को दिया है, ये भारत की जो एक कहावत है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए. तो एक छोटा सा काम कि हम इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाएंगे, इस अकेले काम ने हमको रेवेन्यू दिया, वेल्थ दी, दुनिया में इंदौर का ब्रांड कैसे सभी को नए लेसन्स दे रहा है और इंदौर के लिए भी रेवेन्यू दे रहा है. लगभग 300 मेट्रिक टन पर डे का गीला कचरा बायोगैस बनाने के काम में आ रहा है, एंड विच इज गिविंग अस अराउंड 2.5 CR ऑफ रेवेन्यू पर ईयर.
That project has been leased out. Similarly, the solid waste management has also been leased out, which is giving us around 1.5 CR of revenue per year. इसमें सबसे खास बात यह है कि इंदौर में जब पहले जो लोग गली गली से कचरा उठाया करते थे, प्लास्टिक इकट्ठा किया करते थे, वो सभी सफाई मित्रों को इन दोनों प्रोजेक्ट्स में कचरा सेग्रीगेट करने के लिए एम्प्लॉय किया गया है. उनको लाने ले जाने के लिए जो बसों की व्यवस्था की है, उन बसों में बायोगैस जो हम बना रहे हैं उसी को यूज किया जा रहा है. अराउंड 1000 buses are being filled by this CNG. एक कचरे से जो कंचन है, वेस्ट टू वेल्थ है, आउट ऑफ 85 वार्ड्स 1/4 वार्ड्स आर जीरो वेस्ट. हम अपने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से लगभग 450 एकड़ कृषि भूमि को सिंचित करने का काम कर रहे हैं. 300 टन्स पर डे सीवरेज ट्रीट करके बाय द रिवर्स लाइंस रिवर रिजुवेनेशन का काम कर रहे हैं. तो इंदौर का ये मॉडल केवल स्वच्छता इंदौर को नहीं दे रहा है. दिस हैज गिवन लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, lot of new good schools, lot of new IT companies are coming to Indore. और जैसा कि मेरे पहले के एक वक्ता कह रहे थे कि no city has repeated its municipal bond, but Indore first time came up with a private placement bond for the Amrit project, and recently we are honored to say the Honorable Finance Minister during her finance and the budget speech was saying that it is high time that the municipal body should have come up with the municipal bonds. But before her speech, we got the approval of the SEBI for the first ever green bond of the country. That also has its own importance and a very good success story. Apart from cleanliness, we are lacking in proper water distribution. You won't believe we are using water at the rate of 21 rupees per kiloliter. The Jalud water station, जहाँ से माँ नर्मदा को पंप कर कर ग्रेविटी से इंदौर में वाटर सप्लाई किया जाता है. And for pumping this water, we are using electricity of around 300 CR per year, which is costing us 25 CR per month. So to reduce this electricity charges, we have decided to come up with a solar plant at the water generation station itself, which is again costing around 305 CRs. So for implementing and executing this solar project, we decided to come up with the green bonds, and that too the first urban local body which has come up with a public issue. Out of that 305 CR, 44 CR being given by the central government as a subsidy, and rest of the 20 CR will be getting the solar credits. But this rest of the 244 CR, we issued the green bonds, and you won't believe SEBI for the first time has modified its rules so that in time we can get the approval. And the best part is, on the day one of the opening, we got 661 crores. And overall it closed at 721 CR. We, because of this cleanliness, has become the first city to make laws and to implement
city surveillance system, 100% city surveillance through cameras, that too by public participation. Hyderabad has come up with the city surveillance system, but that was purely on 100% based upon the corporation or the government doing it. But again, this city surveillance is a public participation project. We have also implemented ITMS, Integrated Traffic Management System. So 51 squares of Indore will be operated through this ITMS. One project of this cleanliness has charged every citizen. उसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि यदि सुबह कचरे की गाड़ी का गाना नहीं बजे तो इंदौर के लोगों का दिन सफल नहीं होता है. इंदौर के कचरे की गाड़ी की आवाज़ से लोगों की दिनचर्या शुरू होती है. And that has become the part of our life. And the next target is air quality index. दूसरा, सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त करने के लिए हम लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से 1.5 लाख कपड़े के थैले बनाकर बांटने का काम किया और एक अभियान चलाया कि हम सब झोलाधारी हैं. We have 29 markets which are single use plastic free and disposal free. आप सब जानते ही हैं कि इंदौर स्वच्छता के साथ साथ स्वाद की भी राजधानी है. तो जैसा 56 दुकान है वैसा ही हमारा रात का सराफा भी है. और एज ए मेयर मुझे बहुत खुशी होती है आपसे साझा करते हुए कि इन दोनों ही मार्केट्स में डिस्पोजल्स का यूज़ नहीं होता है. 100% यूटेंसिल्स का यूज़ होता है ताकि वहाँ से कोई कचरा ना निकले. तो ये ज़ीरो वेस्ट मार्केट भी हैं. तो एक स्वच्छता ने, जो वैल्यू चेन की बात है, एक स्वच्छता के नारे ने, एक स्वच्छता की आदत ने इंदौर को लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट दिया. कई सारी नई आईटीज कंपनी लगातार इंदौर आ रही हैं. इंदौर में आईआईटी आईआईएम दोनों हैं. उसका यूज़ कर कर, उस रिसोर्स का यूज़ कर कर हमने कई सारे स्टार्टअप्स को, अकेले इंदौर ने 250 से ज़्यादा, मोर देन 250 स्टार्टअप्स जो कि स्वच्छता पे काम कर रहे हैं. एंड आई विल एंड विथ अ रीसेंट एग्जाम्पल. There are 2 spots which are being taken care in the toolkit for Swachhata. One is red spot, another is yellow spot. Indore is yellow spot free. But even though we have red spots, जहाँ तहाँ लोग खाकर थूकते हैं, पीक करते हैं. तो this time we have taken it as a challenge और we have started No थू-थू अभियान. जहाँ लोग थूकते हुए दिखते हैं उनको हम फर्स्ट फेज़ में जागृत कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं. सेकंड फेज़ में हम फाइन भी करेंगे. लेकिन मैं आपसे जो पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें स्टार्टअप्स ने खुद के लिए भी और शहर के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. द मूवमेंट वी स्टार्टेड दिस नो थू-थू अभियान, 3 ऐसे स्टार्टअप मिले जो स्पिट कप लेकर आए, स्पिट पाउचेस लेकर आए कि भैया ऐसा है कि हो सकता है कि इंदौर में हम लोगों की थूकने की आदत ना छुड़ा पाएं क्योंकि लोगों को पान खाने की आदत है. तो उन्होंने स्पिट कप बनाए, स्पिट पाउचेस बनाए जिसमें अगर somebody स्पिट्स तो इट टर्न्स इनटू जेल. तो हमने करीब ऐसे 3 लाख स्पिट कप और ऐसे पाउचेस को अलग अलग पान की दुकान पर लोगों की कारों में डिस्ट्रीब्यूट किया. तो विद इन 2 months हमारे आधे रेड स्पॉट अभी कम हो गए. एंड होपफुली बिफोर दी सर्वेक्षण हमारे सारे रेड स्पॉट्स खत्म हो जाएंगे. साथ में ये जितने स्टार्टअप्स थे उनको रोजगार मिलने का काम हुआ है. तो एक स्वच्छता ने पूरे इंदौर को रोजगार दिया, शिक्षा दी, पूरी दुनिया में नाम दिया. जहां जाओ इंदौर एक ब्रांड है
और उस ब्रांड के कारण ही जब हमने पब्लिक इशू किया तो 720 करोड़ हमको मिले। आगे कई सारे चैलेंजेस हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक बड़ा इशू है, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ा इशू है, जिस पर हम लगातार अभी काम कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि ऑल इंडिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ये जो इंस्टीट्यूट है, आज से नहीं अपने पूरे इतिहास में इसने ऐसे कॉरपोरेशंस को, छोटी नगर पालिकाओं को बढ़ाने का काम किया है। तो मैं आप सभी को सबसे पहले तो भारत के सबसे स्वच्छ शहर में उसको देखने, घूमने के लिए भी आमंत्रित करता हूं, और ऑल इंडिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि देश भर के और दुनिया भर के मेयर्स का एक बड़ा कॉन्फ्रेंस इंदौर की स्वच्छता का मॉडल दिखाने के लिए वहां किया जाए। का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। In the August gathering, there are a lot of mayors from a lot of different cities. I think I echo their concerns when I say that we should very bravely accept the fact that we have imitated the idea of urban local governance, but I think we have not entirely emulated it till now. The half adoption of the 74th Amendment is one cause of concern. While there are various schemes, the Smart City Mission, the Newlam Mission, and the Amrut Mission and the Swachh Bharat Mission and the Smart Cities Mission, which are transforming the country. The biggest challenge remains the decentralization of policy. Now, I'll give you two examples: the Swachh Bharat Mission and the Smart Cities Mission. And we've heard the great success story of the city of Indore, and there's great case study in sanitation. So I would like to take a moment in comparing the Smart City Mission to the Swachh Bharat Mission. The Swachh Bharat Mission started in 2014. The Smart Cities Mission started in 2015. The Swachh Bharat Mission operates through urban local bodies. The funds, functionaries, and the funds, functions and functionaries aspect in terms of Swachh Bharat Mission is fairly devolved to urban local bodies. So in case of Indore and other cities, I'll talk about Srinagar. I remember when I took over as the mayor of Srinagar in my first term in 2018, it was for the first time after a decade that Srinagar had its urban local bodies. We didn't have any urban local bodies for 10 years. And I remember that we were in the late 400s, after 46 पे थे हम 300-400 में होते तो किस्मती होती। तो हमारा जिक्र जब होता था वो इसमें डेप्रिशिएटिंग ऑर्डर में होता था कि हम पीछे से कितना आगे चले। But we then reached in a matter of 3 or 4 years achievement of coming in the top 40 and then the top 30 cleanest cities in the country, and briefly in the top 20 cleanest cities in the country too. We aspire to be in the top 10 and eventually someday probably overtake the cleanest city in the country. We have a lot of natural scenic beauty. We would like to add better sanitation and solid waste management to it. But small metrics. I remember in my first term as the mayor for almost the same population. We are a city of 1.5 million people, 74 wards. We used to collect nearly 250 to 280 metric tons of waste. We changed and revamped our solid waste measures to collect for the same population 680 metric tons of waste. So that difference was going uncollected and polluting our water bodies in the city. But obviously, if we compare any city in the country to Indore today, there is a lot left to achieve. But I'll again go back to this comparison between SBM or Swachh Bharat Mission or Smart City Mission. The SBM में funds, function, functionaries revolve urban local bodies. Implementing agency भी urban local body है और किसी हद तक planning और policy making agency भी urban local bodies. आप स्वच्छ भारत मिशन का एक्शन प्लान कैसा बनाएंगे, उसको स्पेंड कैसे करेंगे और अपनी सिटी की चैलेंजेस को, सॉलिड वेस्ट और सैनिटेशन की चैलेंजेस को मीट कैसे करेंगे, वो आपका एक it is what you have to do. और 2014 से स्वच्छ भारत मिशन की सक्सेस स्टोरी सिर्फ इंदौर में नहीं, ऑल ओवर द कंट्री, एवरी सिटी आई थिंक हैज सीन कुछ इंप्रूवमेंट, एवरी सिटी हैज सीन। और जो फेलो ऑनरेबल मेयर्स यहाँ पे हैं वो भी एग्री करेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन की जो एक भागदौड़ है, जो पॉलिसी मेकिंग है, प्लानिंग है,
वो एक्शन प्लान जो स्वच्छ भारत मिशन 1 और 2 का बनाना होता है, उसमें कंसेंसस बिल्डिंग है। आप लोकल ग्रास रूट लेवल्स पे, वार्ड लेवल्स पे जाके पूछते हैं कि यहाँ पे सैनिटेशन इंप्रूव कैसे होगी, वो एक्शन प्लान में रिफ्लेक्ट करते हैं। अब आप स्मार्ट सिटी मिशन पे आएंगे। स्मार्ट सिटी मिशन पे मुझे लगता है ये गलत कहना नहीं होगा कि मोस्ट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज हैव नो पॉलिसी मेकिंग रोल इन स्मार्ट सिटी मिशन। हाउ ये एक डायकोटमी जो है, that is also a challenge. That elected representatives of a city have no role in deciding how their smart city will progress and how it should be planned. I think that needs to change. Operating a smart city mission through an SPV, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एक उसमें रोल है, लेकिन अर्बन लोकल बॉडीज का रोल नहीं है। Some cities in the country have an executive committee. Some cities in the country में एक executive committee होती है जो स्मार्ट सिटी मिशंस में एक हाईलाइट करती है रोल कैसा है और क्या होना चाहिए। अब मैं अपने शहर की बात करूंगा। हमारे शहर में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का कोई रोल स्मार्ट सिटी मिशन में नहीं, वो भी एक चैलेंज होती है। Grassroots governance is an asset for this country. To treat it as a liability is a big, it's a self goal. और कहीं पे हम शायद उसको एज ए लाइबिलिटी भी ट्रीट करते हैं। जो पार्षदों का रोल होता है, जो महापौरों का रोल होता है, उसको शायद कहीं पे लाइबिलिटी भी ट्रीट करते हैं और सिर्फ उतना टॉलरेट करते हैं जितना शायद कॉन्स्टिट्यूशनली जरूरी है। मुझे लगता है उससे ज्यादा टॉलरेट करने की जरूरत है। कोई शहर ऐसा नहीं है हमारे देश में जो प्रगति की ओर नहीं जाएगा अगर आप पार्षदों को और मेयर्स को और लोकल बॉडीज को एम्पावर करेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। डेवोल्यूशन ऑफ फंक्शंस एंड फंक्शनलिटीज, बिल्डिंग जो है हमारी ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी जो अर्बन लोकल बॉडीज को है उसको बिल्ड करना है। हमें रेवेन्यू मोबिलाइजेशन अपनी इंक्रीज करनी है। आप म्युनिसिपल बॉन्ड्स की बात करें या अपने टैक्स बेस की बात करें, हमें म्युनिसिपल बॉडीज को, अर्बन लोकल बॉडीज को फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेनिंग बनाना है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल स्कीम ग्रांट्स पे ही निर्भर हैं, तो आपकी पॉलिसी मेकिंग का जो एल्बो रूम है, जो स्पेस फॉर पॉलिसी मेकिंग और क्रिएटिविटी है, इंजेन्युइटी है कि आप ग्रास रूट्स की नीड्स को रिफ्लेक्ट करेंगे, आपके पास वो रूम और स्पेस बहुत कम रहता है। जो सेल्फ सस्टेनिंग, फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेनिंग अर्बन लोकल बॉडी है, सही मायनों में वो ही पॉलिसी लेवल पे भी इंडिपेंडेंट अर्बन लोकल बॉडी है। बीएमसी का एक एग्जांपल है, उनकी फाइनेंशियल सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की हम सब एग्जांपल्स देते हैं और बीएमसी की जो ऑटोनमस पॉलिसी मेकिंग भी है वो डिराइव होती है उनकी फाइनेंशियल सेल्फ सस्टेनेबिलिटी से। तो वो भी एक बहुत बड़ा हमारा चैलेंज है। एक चैलेंज हमारा इफेक्टिव ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है जिसमें सिटीजन फीडबैक मैकेनिज्म्स को डाउनटेल किया जाए। श्रीनगर सिटी ऐसे पोर्टल्स पे अभी काम कर रही है। वी आर अबाउट टू लॉन्च वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न citizen grievance redressal mechanisms in the country, और उसी से हम ग्रास रूट लेवल्स की grievances को रिफ्लेक्ट पॉलिसी मेकिंग में करना चाहते हैं। एक्सेसिबिलिटी टू फोरम्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग बहुत जरूरी है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारी एक्सेसिबिलिटी और सिटीजन पार्टिसिपेशनशिप, कम्युनिटी पार्टिसिपेशनशिप पॉलिसी मेकिंग में बहुत कम है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और अगर सही मायनों में जो सारी सेंट्रल स्कीम्स हैं, मैं फिर से स्मार्ट सिटी मिशन की बात करूंगा, जो पुणे के कमिश्नर हैं, जो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है स्मार्ट सिटी स्कीम्स पे, क्योंकि reforming and rejuvenating urban spaces in a country like India is a very complicated thing. In a Western country, European country, it is not a complicated thing. In our country, it's a very complicated thing. You have to unlearn things, learn things. You have to deal with congestion, huge urban populations and so many urban challenges. But I think all those challenges can, to a certain extent, be met by empowering elected representatives, by empowering the urban local bodies and all tiers of local governance. And I would also request All India Institute of Local Self-Governance and also congratulate them for the 6th South Asian City Summit. I spoke at the 5th South Asian City Summit in my first tenure, I remember, which was held in Goa. And I congratulate you for this. But I would request you to also speak very vociferously and very emphatically and hold sessions about the fact that no state government in India has devolved all 80 functions of the 12th schedule to urban local bodies.
And I think that is the elephant in the room. We talk about all aspects of local governance, but until we address the elephant in the room, we should not, और मैं again हमने कहीं पे शायद ये एक्सेप्ट कर दिया है कि महापौर का जो रोल है हमारे देश में टाइटुलर रोल and executive administration as well as policy making has to be relegated to the bureaucracy. मुझे लगता है हम अपने लोगों के साथ जो हमें चुन के इन positions of responsibility पे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, उनके साथ एक नाइंसाफी करते हैं कि हमने भी शायद कहीं पे इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि हम एक टाइटुलर पोस्ट पे बैठे हैं और ब्यूरोक्रेसी को पॉलिसी मेकिंग भी करनी है और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन भी करनी है. That role reversal has to change. Policy making, the idea of India is that policy making is the exclusive domain of the elected representatives of the country, and the implementation is the responsibility of the officers and the bureaucracy of this country. कहीं पे वो role reversal हो गया. एक role reversal ऐसा हो गया है कि हम policy implementation के पीछे रहते हैं और policy making officers करते हैं. और ये हर एक शहर में कहीं पे ये स्टोरी होगी. मैंने अपनी 2 टर्म्स में जिन फेलो मेयर्स के साथ ये डिस्कस किया है, मुझे लगता है इससे बड़ा कोई चैलेंज हमारे अर्बन गवर्नेंस आर्किटेक्चर में नहीं. We have an honorable minister present here. We will also request him to take this concern to the relevant quarters, and I would request my fellow mayors to speak about the elephant in the room, which is the unfulfilled 74th amendment of the 12th schedule of the Constitution of India. Once again, thank you for the opportunity. I congratulate all delegates for the exchange of views and ideas, and I would also like to extend this opportunity to welcome you to the city of Srinagar and get an opportunity to show you all the wonderful things that we are doing with the city of Srinagar. माहौल तो ठीक है, आप थोड़ा ये कीजिए, भरोसा भी कीजिए और थोड़ा सेव भी कीजिए. आ जाए, माहौल तो ठीक है, माहौल बहुत ठीक है. We hope to see you there और आपको दिखाएंगे कि माहौल भी ठीक है, हमारी नीयत भी ठीक है, हमारा काम भी ठीक है और हमारा जो लक्ष्य है वो भी ठीक है. Thank you. अपने बहुत 74th amendment, the time has come to take a restock of situation because decentralization, devolution and digitalization has changed the total scenario. So decentralization can be delivered effectively without even going through so-called proper channel. We have all seen DBT, government transfer 200,000 lakhs of crores. There is inadequacy in terms of power. We all have seen, so there is a book I will recommend highly. There is a book like Kicking the Ladder. I think it's a very relevant book for each one of us. We were told when we were studying that a good policy and good institution is the only way to develop a nation. This used to be Western philosophy which was shown to us. But we have seen that Indore, with similar less delegation, similar elephant in the room, has shown that they can deliver development without the 74th amendment being relooked and revamped. I'm not saying that is the best way, but where is there a way, where there is Ichha Shakti, all Shakti come together, and that is how Indore and all of us have to look into in these areas. Friends, the time has come to invite another speaker, Mr. Sanjay ji, sharing their own experience in Maharashtra. Over to you. 10 minutes. So far as the urban transformation journey is concerned, so far as the strengths of Pune city are concerned, it's a big city, 6 million plus is the population of the urban agglomeration. After the inclusion of 34 new villages into the old Pune city, 62 lakhs is the population, and with this, the massive growth of population and the urbanization, several issues have come up, increasing the urban sprawl, the traffic issues. The city, the strength of the city is being, it being the hub of IT industry. At the same time, the manufacturing industry is also a path of growth, and it's also an education hub. The largest university in the country, which has more than 900 colleges, is also housed in Pune only, and Pune has 11 such universities to its credit. So with all these strengths, at the same time, it also has natural resources,
A river length of almost 44 kilometers is there. For Pune and its twin city of, my colleague has already mentioned, Pune and Pimpri-Chinchwad, 42 kilometers length of river is running in these two cities. And there are also hills, and the city has adopted the policies of biodiversity preservation. So on this background, several issues have come up, and in this background, the city has to fight for the bringing about the urban transformation, which would be sustainable for the future generations. Let's go to slide number 3. I will go through the initiatives which Pune Smart City and Pune Municipal Corporation has taken so far, so as to ensure the sustainability of urban transformation. In the mobility sector, Smart E-Bus is a major project which we have implemented. We started with 150 e-buses, and we are almost up to now about to upgrade it up to 650 e-buses in the city. And TCO2 percentage in the city has significantly reduced from 7% to 4%, and bringing about the reduction in the fossil fuel consumption and major sustainable transport measure has been been achieved. With the help of our partners like Rocky Mountain Institute and other partners, EV readiness has been our focus since last 2 to 3 years, and clean fuel initiatives have been implemented by the municipal corporation and smart city. Several EV charging stations and the supporting infrastructure is the focus now, and registration of EV electric vehicles, we are aiming to increase it up to 25% by 2025, and we are working in this direction. It is also supported by the metro rail corridors. 2 metro rail corridors are coming up in the city, which are of length of 31 kilometers. 13 kilometers have already started, and within 3 months again the remaining part will be going on. Total 100 kilometers of metro rail has been planned for the twin cities. So that will be again adding to sustainable transport for the city. So far as the energy sector is concerned, street light has been implemented since 2018-19, and 1,87,000 lights have been replaced. 60% of reduction in the energy and overall 74% of saving. Together, energy and the maintenance has been achieved by way of implementation of projects like smart street LED lighting, which is implemented on a PPP mode for a period of 12 years. So again, that financial sustainability or financial resource has also been raised and implemented by way of this project. 7.2% of reduction in carbon footprints has been possible by way of smart street LED lighting. So that is quite significant. We have also focused on the solar rooftop project, and Pune Municipal Corporation in all its buildings have implemented the solar PV model, and almost 1.3 crore units of solar energy are generated every year. The effort is now driving towards making at least 15% of our energy demand from the non-conventional energy resources. That is our ultimate objective. City West to City Bus, it's another innovative project, as Honorable Mayor from Indore had mentioned. So we have also implemented 125 metric ton project, which processes the waste into energy, and which is being directly utilized for the 100 e-buses for running in the city by way of a joint venture of PMC, PMPML, IOCL, and Noble Exchange. In the solid waste management front, 100% segregation of waste is again followed by. We are fighting on the both sectors of dry waste recycling and wet waste processing. And 1100 tons of dry waste is daily recycled by way of its 11 units, and 2 units for wet waste to energy plants are also working. We are also upgrading our wet waste processing capacity by 750 tons soon, which will be implemented, and 13.19 megawatt of energy will be generated by way of this project. In future, again, we are going to upgrade the dry waste processing capacity up to almost 2,400 metric tons. For sewage treatment, with the help of National River Conservation Scheme and support from Zyka, sewage treatment plants have been taken up. At present, out of the 883 MLDs of sewerage which is generated by the city, 567 MLDs are processed. With the help of this new project, 10 STPs have been planned, and the remaining
almost 400 MLDs will be processed with this, so that 100% of the sewerage of the city will be processed. That will be again a major step in the field of sustainability. Water management is also a very crucial part, and reducing the energy consumption for water distribution in the city, making water distribution more efficient and smarter. That is the ultimate objective by way of our water 24/7 project. And sustainable and equitable distribution of water is being achieved by way of smart AMR meters, the smart reservoirs, the sensor-based pipelines, which will be again reducing our expenditure on the maintenance and other part. Already almost 20% of the zones have already been made functional, and in a year or so, complete the project of water 24/7 will be completed for the whole city. As I mentioned about the river, for river rejuvenation again on the lines of cities like Ahmedabad, we have also taken up the river rejuvenation project by way of SPG, and we will be tackling the 44 kilometers of Riva and rivers which pass through our cities, and the work has already been started, which will be adding to the flood carrying capacity of the rivers, the water quality. It will also upgrade the mobility along the rivers, and also it will raise the places of citizen engagement by way of this. Green building promotion is another major initiative which Pune Municipal Corporation and Smart City have taken up. We have an MOU with IGBC and Bihar, and through them, the rating system which they are providing to the construction projects, we are incentivizing green building development by providing the incentive FSI to the extent of 0.3, 0.5 and 0.7 as per the rating which the projects are receiving. We are proud that the second number green building footprint amongst the cities is available, has been achieved in Pune by way of with the help of our partners and the municipal corporation efforts. Again, as I mentioned, housing, affordable housing is another issue which the growing city needs to tackle. And with the projects of the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban, almost 6,000 houses have been planned. Half of them have already been delivered, and half of them are almost in the last stage of completion, and very soon will be handed over. Collaboration with international agencies has been another hallmark of development in Pune of urban transformation. Agencies like IGBC, UN Habitat, ICLAI, BBLF. We are working with BBLF for the infant, child and toddler caregiver friendly environment creation in the city. At the same time, ITBP is helping us for in the transport and the mobility sector. WRI, Birmingham City and several other organizations are helping us, and they are guiding source of inspiration to us, and they are partnering with us in several initiatives. So, to sum up, sustainable infrastructure, which is being by way of the Smart City Mission projects and the PMC initiatives, inclusive growth, which we are going to achieve by way of all our projects, so as all sections of the societies are benefited and they are taken along in the trajectory of urban transformation. Smart technology by way of the several technology-driven and technology-rich projects of Smart City Mission and the Municipal Corporation, thereby reliability of the city is being increased. And of course the governance and participation, which is most crucial, which earlier speakers have already mentioned. So methods like participatory budgeting, which was implemented for the second year now this year, and every citizen had an opportunity to suggest a work to be included in the annual budget of the municipal corporation, and that system, that mobile app and the system was developed by Smart City for the municipal corporation. So on these principles, Pune City and Smart City SPV have been working for bringing the urban transformation. Thank you. India urban future should be doing smart presentation and sticking to the time. Thank you. Hi, hello, good evening everyone. I think it's been the whole day, you people are here and I can see the tiredness and the smile is little left on your face, so please just smile. Smile is the best accessory that one can carry. So big round of applause to you all that you have here. How can I say anything? First of all, this is such an important day for me because my ideal
Bakhair Bhaiya, our Law and Justice Minister, is here, and in front of him, I'm just delivering some of my thoughts, which is really, really a moment for me. Secondly, how can I can talk with my DICE members, the Mayor of Indore. Look at the thing, how can I say anything? Just because your Agra is incomparable. So I cannot even talk about that. The Srinagar Mahal bhi or Mausam bhi. And I'm really looking forward for, and this is even a very good day for you that you can give your representation to Minister itself on behalf of all of your fellow mayors. Your voice is directly rising in a parliament. So yeah, and all of you, the mayors, the dignitaries, and our team, and especially I'm saying our team because I really feel like the part of, and Ravi. Your name is really like the meaning of Ravi is son, and he's a Deputy General, so big round of applause for him. He's trying to make everything just so perfect. So this is 6th Asian City Summit. So I just wanted to say that summit yourself here, because just be in that moment, be aware. As Indore Mayor said, कि सुबह सुबह हमारी कचरे की गाड़ी गाना गाती है, तो I think that city anthem, because कोई भी चीज which makes you aware, which gives you attentiveness, that become an anthem. So I think that is what one can do the best for the day. And urban बात करते हैं तो जो मेरा experiences रहा है, that is if I talk about our honorable minister, he's a man, urban man, because he always take the best out of everything. When he's into a rural side, he try to give that calmness to urban people, and when he's in urban side, he always think that I should do something more, I should go in a better manner. तो I think हम सबको जो विकास है वो हर चीज़ का पॉजिटिव लेना चाहिए और उस पॉजिटिविटी के साथ and mayors are I think this is again a जन सहभागीदारी. तो जब आप अपने लोगों को उसमें मिला देते हैं, जैसा कि इंदौर की बात हो रही थी कि it become a जन सहभागीदारी उत्सव, एक उत्सव के जैसे वो बदल जाता है. तो I think it's not only about talking things. I think this is a time to do the action, and really thank you so much for all of you for your time, and thank you so much. बहुत अच्छे पैसे मिले इंदु पर प्रकाश डाला तो सुनहरा प्रकाश The esteemed August company here, a very good evening to you all. I know I stand between the end of the day. Most of you are patiently waiting, I think, to hear our minister sir here. So I'll keep it short and brief. I am Dr. Devjani from National Institute of Urban Affairs. A lot of you would know that NIUA is a think tank for the Ministry of Housing and Urban Affairs. And I'm very proud to say that all the city representatives who are sitting here, NIUA has been working with them on multiple occasions under multiple projects. So I bring to you a different side of the urban transformation, which is essentially that NIUA believes that to bring in urban transformation, what you need is that you build the capacity of the people who are going to bring about this urban transformation. So without building the capacity or building the knowledge base of the people who are going to transform your city, how can urban transformation be possible? So NIUA's engagement in the domain of knowledge management and capacity building has been immense for over 40 years now. And instead of going to, a lot of you might be knowing about it, so I don't want to get into the generalistic side of capacity building and knowledge management which NIUA does. Rather, I will bring to you a very specific, I would say, capsule of capacity building. When we're talking of urban transformation, we increasingly are talking about digital transformation or bringing about transformation through digital means, because for everybody time is precious, and when we are wanting to build the capacities of our urban stakeholders in the various cities and state governments, we know that it is very difficult for them to come for capacity building and knowledge management and trainings and workshops. So
what has been coming out is try to give it to them on the go, give it to them digitally where they don't have to be physically present. So basically doing something online. So under this context, I would try to, can we go to the earlier slide please? The first one, please. Yeah. So I bring to you a specific capacity building initiative which NIUA is supporting, which is called the National Urban Learning Platform. This is a platform at the national level which is basically a tool to distribute and disseminate knowledge and information to all our city officials, elected representatives, the state government, urban development departments, and the wider domain of the canvas of urban development. Next please. Oh, sorry. Yeah, so what forms the NULP or the National Urban Learning Community? As you will see that it's an approach where a network of actors come together. And who are these actors? The platform which can be accessed by different stakeholders, be it the urban officials, be it academia, be it civil society, researchers, and anybody who has interest in the domain of urban. And the idea behind this is basically to build a very strong urban community who can learn from each other. So, how does NULP drive digital transformation, which I was just telling you earlier? So, we have three components majorly under the National Urban Learning Platform. One is self-paced learning, which is, as I was telling you, short or small bite-sized modules. These modules are basically urban solutions which can aid the urban official to access or quickly get to urban solutions if that person is facing a challenge at the moment. Secondly, as I mentioned, peer-to-peer learning. So this platform is a place where a lot of documentation and best practices are put together for the entire urban community to learn from each other, because we all believe and know that the best way to learn is to share ideas and share knowledge, and you also learn in the process. The third is an online nationwide program which is being hosted by the Ministry of Housing and Urban Affairs, and NIUA is giving, because NULP or the Urban Learning Platform is also a learning management system. So we provide online courses also, both certificate courses as well as other courses in pretty much most of every domain, so that officials who are interested in enhancing their knowledge, they can do so through this platform. So what does NULP bring in terms of value for its users? So as I said, that we have a large community and the stakeholders are also quite large, and it's a demand-driven platform because we go to the state governments as well as to the cities and we do a need assessment. We ask the officials and the other stakeholders that what is it that you need that has to be there in the platform which is going to help you, which is going to enhance your knowledge. It could be any sector, it could be any domain in the urban sphere. And that is how we provide the content on the platform, so that ultimately it is demand-driven and it is useful to the people out there. I mentioned peer-to-peer learning before, so I'm not repeating. And as I said, we have diverse domains. So you can see, as of now, we have a vast range of e-learning solutions. We are working in 15 domains and we are adding every day. And then also, what does it give you? It's a very easy access. I will share the login ID, I'll share the email ID. So any of you who are interested, you can just log into the platform and see what it gives you in terms of knowledge and learning. It rewards and recognizes you. So the officials who are on the platform, who are learning or contributing, because it gives you a two-way thing. You can either learn or you can also contribute for others to learn. And everybody who's contributing on the platform is recognized and rewarded. And then we have courses which are certificate courses, and also the award goes in terms of custom certification. So these are some of the features in terms of courses as well as
other things which are available, and we have started from NULP 1.0 and we are going towards NULP 3.0, which is an upgraded version every time, adding more diverse features to it. So we are pretty much in almost all the states and the cities pan-India, and we are engaging every day with them in terms of both online and offline to bring more people and convince more people who see value in coming to the platform. These are some of our partners, because we provide content also. So we have partners who are providing content, we have partners who are providing courses, and we also have partners who are empaneled with us, who are providing quality learning in terms of making what is good for you better every day. And it's always through multiple quality checks at every level, so that what ultimately goes to you is never compromised in terms of quality. So I will end today with a particular short video which will tell you a particular event which we have launched on National Urban Learning Platform. It is a 45-day challenge for every ULP and state government official working in the domain of urban, and it's a challenge which asks them to provide solutions, any form of urban solutions, be it a video, be it a best practice, and that solution in the end will be awarded in terms of cash prizes. You see the video, it's a 1-minute video which will give you the details. And I would request every city, state representative in this room to please connect on the NULP platform and have a look, and I'm sure you won't be sorry. Can we? Launched by the Honorable Minister Shri Hardeep Singh Puri last month, and once again I request all of you to come and engage with us. Thank you. Thank you, ma'am, for not only being brief but also telling something which each one of us can fall back upon. Friends, all good things come to an end, and they should end with the speech of none other than Honorable Minister. Let me say one thing. We just heard from Mr. Sekhar Singh the problem of cyclists. We heard from Mayor Indore the problem of Thukna. We heard from others problem of Muskarana. We also heard from others from how to do for e-learning. Friends, India has 22 million bureaucrats who are serving the Indian and nation states. And there is a Mission Karmayogi, a very major achievement, major initiative of Government of India to change the mind and mindset of bureaucracy, and National Urban Learning Mission is part and extension of the same. And I must compliment them for having self-paced learning, peer-to-peer learning, and even on-demand and online learning, which anyone can take advantage of it. I hope and trust
that version 3 will be more popular than the version 1 and 2. And with this small, I think, brief about the session 3, let me take the privilege of requesting Professor S.P. Singh Baghel, Honorable Minister of State, Law and Justice, Government of India, who also hails from Agra and MP from Agra, and for almost 3 decades you are MP from Agra. It would be a pleasure to listen to you, sir. Over to you. And there is no time limit for Honorable Minister. मंच पर बैठे हुए सभी महानुभाव, सभागार में उपस्थित सचिव, मेरा सौभाग्य है कि शहर में कैसे सफाई हो, वाटर मैनेजमेंट कैसे हो, सुंदर कैसे दिखे, लोग शहर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, एक अच्छी लाइफ कैसे उनको दी जाए, उसके बारे में विद्वान वक्ताओं के विचार सुने। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं बाद में बात करूँगा, क्योंकि मैं जहाँ से एमपी रहा हूँ वो उसमें कोई शहर ही नहीं था, जहाँ से मैं 3 बार एमपी रहा हूँ, तो रूरल की पार्लियामेंट थी। पहली बार आगरा से एमपी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं पूरे देश से आए हुए मेयर साहबान का और अदर डिग्निटीज का राजनीतिक राजधानी और प्रशासनिक राजधानी दिल्ली में अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी सरकार की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज दिल्ली की यमुना में दक्षिण से आई हुई गोदावरी का, कृष्णा का, कावेरी का, आपकी नर्मदा जी का और उज्जैन की क्षिप्रा का, गंगा का, झीलम का संगम हो रहा है। पूरा देश आज थोड़ा इस अवसर का सरकार क्या कर रही है, मेरा विभाग नहीं है लेकिन थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मुझे लगता है कई मेयर होंगे जिनका शहर स्मार्ट सिटी में भी होगा। मुझे लगता है इंदौर भी स्मार्ट सिटी होगा। इस शिखर सम्मेलन का विषय जो इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट सिटीज है, यह 2 दिवसीय कार्यक्रम क्लाइमेट क्राइसिस, मोबिलिटी चैलेंजेस, रेजिडेंस इशूज, वाटर मैनेजमेंट से संबंधित मुद्दों सहित हमारे शहरों के सामने आने वाले कई प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का उद्देश्य रखता है। इस सम्मेलन में आप विशेषज्ञों से जानेंगे कि स्थानीय स्तर पर इन चुनौतियों को कैसे निपटा जाए। इंक्लूसिव सिटी सभी नागरिकों को समान अधिकारों और भागीदारी की गारंटी देता है, जिसमें सबसे हाशिए पर रहने वाले नागरिक भी शामिल हैं और यही अंत्योदय है। आज के विकास की दौड़ में शहरों को रेजिलिएंट बनाकर संभावित खतरों के प्रभाव को कम करके मानव जीवन की रक्षा और संरक्षण करने की आवश्यकता है। आज दुनिया रेजिलिएंट होने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। आंकड़े ये बताते हैं कि क्योंकि दुनिया की लगभग 60% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। हालांकि मैंने अपने बचपन में पहला भाषण जो चौधरी चरण सिंह का सुना था 1969 में, तो उन्होंने कहा था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, गांव का देश है, देहात का देश है, देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान से जाता है और 90% देहात समय का ये आंकड़ा था। और उसके बाद शहरीकरण हुआ है। मुझे लगता है कि विश्व में बड़े शहर है, इसलिए 60% आबादी का औसत निकल के आया। भारत ऐसे शहरों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है जो व्यापार और रोजगार के अवसर पैदा करें, जिससे नागरिकों का जीवन सुलभ और समृद्ध हो। शहर में अर्बन लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय निकाय सरकार शब्द लोगों द्वारा अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से एक शहरी क्षेत्र के शासन को दर्शाता है। वर्ष 1992 में संविधान के 74वें, जिसका बहुत जिक्र हुआ है, संशोधन से एक नया भाग जोड़ा गया है और संविधान के अनुच्छेद 243B से 243ZG में नगर पालिका के लिए प्रावधान किए गए। मेरे ख्याल से वहाँ से शक्तियाँ भी ज़्यादा मिली हैं इस अमेंडमेंट के बाद और धन की उपलब्धता भी उसके बाद ज़्यादा हुई होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में भारत सरकार ने शहरों में
इंक्लूसिविटी एंड रेजिडेंस को ध्यान में रखते हुए कई कार्यक्रम शुरू किए। 100 शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किया गया। इसके अंतर्गत 5000 से अधिक प्रोजेक्ट पूरे हुए। इसके अलावा शहरों के विकास के लिए जो मेयर साहब ने कहा था कि अमृत योजना के तहत 4000 से अधिक प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं। आगरा को गंगा जल की जो वहाँ से 100 किलोमीटर से दूर है, इस अमृत योजना से ही हम तो पानी पी रहे हैं। 62 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए हैं। पीएम आवास योजना के तहत 1 करोड़ 22 लाख हाउस स्वीकृत हैं। 72 लाख घरों का निर्माण हो गया है। ये भी सभी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाती है। शहरी विकास को बढ़ावा देने में मदद कर रहे हैं। इससे लोगों के जीवन में गुणवत्ता सुधार हो रहा है, ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा मिल रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पैराग्राफ मैं नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, आप सब इससे सहमति हैं कि कितनी सारी योजनाएं चल रही हैं। हम सतत विकास के लक्ष्यों की बात करते हैं तो भारत ने दुनिया के सामने मिसाल कायम की है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण हमने कोविड, जिसमें आप लोगों का बड़ा रोल रहा है मेयर साहबान का, कोविड-19 महामारी में समय पेश किए गए अपने प्रतिदिन अपने शहरों का सैनिटाइजेशन अमृत था उस समय सोडियम हाइपोक्लोराइट। ये महसूस किया होगा आपने कि सबसे ज्यादा उस समय आपकी भूमिका रही है। हमने प्रतिदिन अपने शहरों का सैनिटाइजेशन, 2 गज की दूरी, मास्क को सार्वजनिक रूप से सभी लोगों के लिए अनिवार्य करने की दिशा में त्वरित कार्रवाई की। हमने प्रतिदिन औसतन 43 लाख से अधिक वैक्सीनेशन किया। उपरोक्त सभी कार्य दर्शाता है कि हमारा देश रेजिलियंस प्राप्त करने में कितना सक्षम है। निःशुल्क टीकाकरण योजना के अंतर्गत 198 करोड़ डोज देश के दूरस्थ व दुर्गम स्थानों पर उपलब्ध कराई गई। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को आगे बढ़ते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी राज्यों के मुख्य सचिवों, मुख्यमंत्रियों के निरंतर संपर्क में रहे और स्थिति से निपटने के लिए मार्गदर्शन दिया। इतना ही नहीं, वैक्सीन मैत्री योजना के अंतर्गत वसुंधैव कुटुंबकम की भावना से आगे रखते हुए हमारे पड़ोसी देशों और सुदूर पड़ोसियों सहित विश्व के 98 देशों को भी वैक्सीन और दवाइयों की आपूर्ति की गई। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की विचारधारा से भारत को सतत विकास की तरफ ले जा रहे हैं। तो मैं इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। मैं मेरे विभाग ने जो लिखा वो मैंने पढ़ दिया, लेकिन मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि समाधान है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य मेरी लोकसभा के अमल खेड़ा गांव में पैदा हुए और उनका एक वाक्य मुझे दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान लगता है और वो ये है कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। मुझे लगता है कि यही आज की पूरी सेमिनार का मैं आज रहस्य उद्घाटन और कर दूं कि जब मैं पुलिस छोड़ के राजनीति में आया तो अपने शहर का मेयर बनना चाहता था। बाद में यह अनुभव हुआ कि देश के सभी मेयर एमएलए बनना चाहते हैं। फिर यह अनुभव हुआ कि सभी एमएलए एमपी बनना चाहते हैं। तो मैं सीधे 5 बार एमपी हो गया। ऐसी क्यों मेरी इच्छा थी, कभी मेरी भावना समझो। मैं चाहता था जो भी काम करें उसमें एक इतिहास लिखा जाए। सांसद इतिहास नहीं लिख सकता, मेयर लिख सकता। आपसे पहले वालों ने लिखा और अब आपकी जिम्मेदारी है कि उसको मेंटेन करें। मेयर अमर हो सकता है, थोड़ी कमिश्नर वाली टीम उसके साथ है। इनका भी ननद भाभी जैसा झगड़ा रहता है। कई बार मेयर दूसरी पार्टी का चुन जाता है और राज्य में सरकार दूसरी होती है। मेयर बड़ा परेशान किया है, खासतौर से वो बिलिंग और ट्रिपल इंजन की सरकार हो तो ठीक से कर सकता है। अभी तो डबल इंजन ही होता है, मैं उसको ट्रिपल इंजन कहता हूँ कि केंद्र की, राज्य की और स्थानीय निकाय की सरकार अगर एक पार्टी की हो तो ये डबल इंजन वाली तो जा नहीं रही है, तो तीसरा इंजन के लिए भी अपील करता हूँ कि वो भी जोड़िएगा तो ज्यादा अच्छा विकास होगा। हालांकि यहाँ सभी पार्टी के
मेयर बैठे और वो समझ रहे होंगे कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ तो कितनी परेशानियां राजनीतिक कारणों से भी होती है। हमारे आगरा के मेयर काउंसिल के अध्यक्ष थे, आप शायद हो गई, आपको बधाई। मैं आगरा से एमपी हूं। कई बार सम्मेलनों में गया तो कहते हैं सारा इलाज ये है कि मेयर को कमिश्नर की चरित्र पंजिका लिखने का अगर अधिकार मिल जाए तो काफी समस्याओं का हल हो जाएगा। अभी तो पॉलिसी मेटर है, लेकिन भयबिन प्रीत भी नहीं होती है। कई बार जब बुलडोजर चल जाता है ना, तो वो भी कई समस्याओं का समाधान होता है, चाहे नगर निगम का बुलडोजर हो या योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर हो। उधर क्रिमिनल्स की सफाई हम लोग कर रहे हैं और इधर आप इंक्रोचमेंट की सफाई कर रहे हैं। शहर के एक कोने में चलता है, कई लोग ठीक हो जाते हैं। तो जन भागीदारी, और मुझे लगता है कि अंग्रेजी की कहावत है कि गिव मी अ फिश एंड आई ईट फॉर अ डे, टीच मी टू फिश एंड आई ईट फॉर अ लाइफ। एक मछली दे देंगे तो एक दिन खा लेंगे, मछली मारना सिखा देंगे तो पूरी जिंदगी खाया जा सकता है। मछली इसलिए इस्तेमाल है कि यूरोप की तरफ आप इसमें दाल बाटी चूरमा बाफले भी जोड़। इंदौर मॉडल एक तीर्थ स्थल हो गया है स्थानीय निकाय के मामले में। मैं मिनिस्टर बनने से पहले अर्बन डेवलपमेंट कमेटी का स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था। दुर्गा शंकर मिश्र जो उसके सेक्रेटरी थे और जगदम्बिका पादरी के। अक्सर एमपीज की डिमांड होती थी कि इंदौर के मेयर और सीईओ को प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाया जाए। मैंने आगरा के भी कमिश्नर को और पार्षदों को कहा था कि आप इंदौर विजिट करके आए। हर राज्य की अपनी अलग अलग स्वभाव होता है, हर शहर के नागरिकों का अलग स्वभाव होता है। मैं कह रहा था कि कुछ राज्य ऐसे हैं और कुछ शहर ऐसे हैं कि विश्व बैंक भी उनको गोद ले ले तो भी वो नहीं सुधर सकते। इंटरनेशनल मॉनिटर फंड भी हाथ जोड़ जाएगा कि पैसा बहुत खर्च हो गया है, सफाई नहीं हो पा रही, तो स्वभाव भी होता है। लेकिन कई बार घटनाओं का बड़ा फर्क पड़ता है। गांधी ने एक मुट्ठी नमक उठाया, देश खड़ा हो गया था। ऐसे ही श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन वाल्मीकि मंदिर दिल्ली में झाड़ू उठाई तो देश ने झाड़ू उठाई। उन्होंने प्रतीकात्मक उठाई, अवेयरनेस आई है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो एक दिन के झाड़ू उठाने से आपका 20% काम तो कर दिया, बाकी तो संसाधन होंगे तभी सब ये सब हो पाएगा। मुझे लगता है कि ये जो कंक्रीट का जंगल बहुत तेजी के साथ शहरों में बन रहा है, अगर गांव में 3 कारणों से हम गांव छोड़ना चाहते हैं, अगर वो 3 सुविधाएं मिल जाए तो आपको नोट कर मिल जाए, एक शिक्षा, एक चिकित्सा और एक रोजगार। बाकी तो आपके कितने ही अच्छा इंदौर शहर हो, लेकिन गांव से अच्छी हवा नहीं होगी, गांव से शुद्ध दूध नहीं होगा, गांव से अच्छी सब्जियां वहाँ पर नहीं होंगी, कोई छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन ये मूलभूत अगर सुविधाएं मिल जाएं तो जो लोड पड़ रहा है आप पर। दूसरा मुझे एक समझ में आता है कि अभी तक एक कोई बिल्डर या बिल्डर भी नहीं कहेंगे, प्रॉपर्टी डीलर खेत खरीद लेता है और प्लॉट काट देता है और बिक जाते हैं और बनने लगते हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटी अगर 50 साल पहले और नगर निगम और विकास प्राधिकरण अगर सख्ती बरतते, ये सबसे बड़ी समस्या मुझे समझ में आ रही है। मैं गांव का रहने वाला हूँ, छोटा सा गांव है, 32-33 घरों का एक कुआं होता था। जुलाई अगस्त के महीने में ऊपर तक पानी आ जाता था, तो बिना रस्सी के लटक के भी मैंने पानी उसमें से खींचा है। फिर मैं बड़ा हुआ तो रस्सी बड़ी हो गई, तो रस्सी 10-12 फीट की हो गई। फिर मैं और बड़ा हुआ तो रस्सी 22 फीट की हो गई। और जैसे हमारी उम्र बढ़ती गई, रस्सी की लंबाई बढ़ती गई। उम्र बढ़ रही है लेकिन अब रस्सी खत्म हो गई, क्योंकि वो सब कूड़ा घर हो गए हैं
यही हाल होगा आपके राज्यों में भी, आपके शहरों में भी। अब उसमें से पानी वानी नहीं आ रहा है। शादी से बारात से पहले माँ कुएं में पैर लटकाती थी, पता नहीं कहाँ लटकाती होगी, क्योंकि अब कुएं नहीं रहे। हमारे यहाँ रिवाज है कि कुएं में पैर लटकाती है, तू शादी करने जा रही है, वादा कर, वरना मैं कुएं में गिर रही हूँ, कि मेरे खाने पीने का ध्यान रखेगा। तो अब क्या हैंडपंप को पकड़ती होंगी या क्या करती हैं? तो फिर वो ये बेकार हो गया। फिर तालाब, हमारे पूर्वज वाटर मैनेजमेंट और वाटर हार्वेस्टिंग हमसे ज्यादा अच्छा जानते थे, उनके पास ऐसा कोई प्रेजेंटेशन नहीं था। लेकिन एक तालाब भरता था, ओवरफ्लो होने पे दूसरा, उसके बाद तीसरा, तो पानी का स्वाद ठीक रहता था, पशुओं को पानी पिलाया जाता था, और इतने स्वच्छ रहते थे कि हम लोग उसी में नहाते भी थे, कपड़े भी धोए जाते थे। मुझे लगता है कि जिसके घर के आगे तालाब था, उसने अपने घर का कूड़ा अपने सामने डाला, फिर आगे डाला सबने, और धीरे धीरे उस पर हम अतिक्रमण करते रहे। और मुझे लगता है सब लगभग तालाब, अगर प्रधानमंत्री जी अमृत महोत्सव में तालाबों वाला इशू नहीं लेते, तो ये पुनर्जीवित अब हो रहे हैं जाकर। जो जीवित थे वो मर गए थे, अब पुनर्जीवित होने का काम मोदी जी के जमाने में जो है, ये अमृत महोत्सव में यदि चुनाव लड़ जाते तो वो सूरत के एमपी हो जाते, इतने वो पॉपुलर हो गए थे। तो मेरी जो इच्छा थी ना मेयर बनने की, वो चीज है कि सुबह 5 बजे मैं उठता, नाले के बगल में खड़ा होता। अब 5 करोड़ मिलते हैं, 5 विधानसभाएं हैं, 1 करोड़ रुपए एक असेंबली के लिए मिलता है। 200 किलोमीटर लंबी पार्लियामेंट है, नगर निगम का 1000-1200 करोड़ का जो भी रास्ता होगा आगरा का। इसके बावजूद जो भी कारण हो, मुझे सांसद निधि से आगरा शहर में गलियां बनानी पड़ती। अब मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, स्थानीय निकाय के सब कोई काम करते हैं, इसका मतलब वो 1000 करोड़ का बजट भी कम पड़ रहा है। और हमारी वो जो 1 करोड़ है एक विधानसभा के लिए, उसका भी मैं 60-70 लाख रुपए सड़क बनाने में इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मैं देश का अकेला 6 टाइम का एमपी हूँ जिसने कभी एनजीओ को, ट्रस्ट को, सोसाइटी को, किसी विद्यालय को मैं पैसे नहीं देता। और मैं केवल सड़क बनाता हूँ, क्योंकि मैंने जॉन ऑफ कैनेडी की किताब पढ़ी, तो उन्होंने लिखा था कि अमेरिका पैसे वाला शहर है, इसलिए सड़कें नहीं बनानी। हमने अपनी प्राथमिकताओं में पहले सड़क बनाई है, इसलिए हम पैसे वाले शहर हो गए, पैसे वाला देश हो गए। ऐसा उसका प्रभाव मेरे पे पड़ा। दूसरा ये है कि आप हैंडपंप हमारे प्रयास से कोई दे जाता है, फिर पड़ोसी को नहीं पीने देता। मैं लेके आया हूँ, विधवा पेंशन इंडिविजुअल है, विकलांग पेंशन बिल्कुल इंडिविजुअल है, वृद्धावस्था पेंशन बिल्कुल इंडिविजुअल है, बंधु का लाइसेंस एकदम इंडिविजुअल है। मुझे लगता है सड़क सेकुलर है, वो मना नहीं करती है कि तुम दूसरी पार्टी के हो, बीजेपी के एमपी ने बनाई है, तुम फलानी पार्टी के मेरे ऊपर क्यों चल रहे हो। ये केवल सड़क है जो सेकुलर कह लो या मना नहीं करती है, उसमें हर जात, क्षेत्र, पार्टी के लोग उसमें चलते हैं। और मुझे लगता है कि शहर में जब मैंने गली बना दी, परसों मैंने एक बहुत मलिन बस्ती में केवल 300 मीटर की सीसी का उद्घाटन करने गया, तो एक महिला ने मेरे से कहा कि इस सड़क बनने के बाद मेरे लड़के की शादियां ज्यादा आने लगी। क्या ऐसा नहीं होता? मेयर साहब समझते होंगे जब आप किसी मोहल्ले में। उन्होंने ये कहा कि मकान की कीमत तब तक मिट्टी थी, वहां पर कुछ भी नहीं था, वही खेतों में बने मकान, इसके बाद हमारा घेराव, इसके बाद इलेक्शन ईयर। तो मैंने वो सीसी बनाई, तो उन्होंने कहा कि मकान की कीमत 1.5 गुनी हो गई है केवल 3 महीने के अंदर। जब से जल्दी शुरू हुई थी तो शुरू में तो शिलान्यास को झूठा माना जाता है, तो कीमत कम बढ़ी, लेकिन जब उद्घाटन की स्थिति में आ गई तो वो उनका मकानों की कीमत 1.5 गुनी हो गई। तो मुझे लगता है गिरता हुआ भूजल स्तर, वो मैंने जो कुएं का उदाहरण दिया। आगरा में मैं आया तो वाटर का पानी चढ़ जाता था छत पे। एक दिन वाइफ ने कहा कि पानी नहीं आ रहा, तो मैं टिल्लू खरीद के लाया। फिर एक दिन टिल्लू भाई साहब रोने लगे, मेरे बस की नहीं है, तो जेट पंप आवश्यकता आविष्कार की जल्दी आगरा में ही बनता है, तो जेट लगाया। फिर जेट रोने लगा तो समर बहन जी लेके आया। आजकल वो भी नान ऊपर कर रही है कि मेरे बेटे का पानी खींचना। तो इस 35-40 साल में जब पानी की स्थिति ये आई है, मैं सांख्यिकी का छात्र नहीं हूँ, तो आने वाले 35 साल में क्या होगी। मैंने बचपन में एक बात सुनी थी कि तीसरा युद्ध पानी पर होगा। तीसरा विश्व युद्ध हो या ना हो, लेकिन मोहल्ले युद्ध सभी मेयरों ने देखे होंगे। वो मैं तो आई वॉन्ट एंड गॉट ऑफ एन एमपी, भैया और बता दूं मैं इंदौर में पैदा हुआ।
क्या बात है। मेरी जन्मस्थली को ठीक किया, मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा। लेकिन और कुछ कह रहा था, बात निकल गई। हाँ, मोहल्ला ही आपने देखा होगा। हाँ, मैं मध्य प्रदेश में तो पानी की बिजली थी, तो अखबार में आता था कि कल 3 दिन पानी नहीं आएगा, इसके बाद सुबह 6 से 7 आएगा। ऐसा 39 साल पहले करता, शाम को 4 से 5 मैं अशोकनगर में पढ़ा, तो कहीं भी कुछ भी काम हो मुझे शाम को 4 से 5 नल के नीचे आना ही पड़ता था, क्योंकि उसी समय पानी आएगा, तो इसको भर के हम लोग टंकी में रखते थे। मोहल्ले में हो रहे या नहीं हो रहे, एक लाइन लगती है, पीछे गुंडा टाइप का आदमी आता है, वो लाइन तोड़ता है, फिर बाल्टियां बजती हैं, फिर वो खून, हाँ एक शेर याद आ गया, ये बड़ा मामूल है कि खून इस दौरे गलानी में बहुत सस्ता है। दौरे गलानी माने महंगाई का युग। खून इस दौरे गलानी में बहुत सस्ता है, रात फिर गांव में एक कत्ल हुआ पानी पर। या फिर शब्द शेर की जान एज यूजुअल कि खून इस दौरे गलानी में बहुत सस्ता है, रात फिर गांव में एक कत्ल हुआ पानी पर। और होते हैं, आपने सुने होंगे, मेरी पार्लियामेंट में यमुना पार पानी की समस्या, 2-3 मर्डर यही वाले लाइन में लगने पर। तो फिर जब लड़ाई होती है तो जो बाल्टी होती है वो हथियार के रूप में इस्तेमाल होती है। तो फिर धारा 147, 48, 49, 323, 504, 506 का मुकदमा कायम होता है, और वो एक बाल्टी पानी 30-40 हजार की पड़ती है। तो ऑन रिकॉर्ड बोलना पड़ रहा है, तो क्या करने पड़ता है। तो वो साहब इसका नाम निकालो, तो कहता होगा ना पैसे, तो ये नाम करना चाहिए, तो पैसे लो, ये धारा हटाओ तो कुछ मांगा गया होगा, धारा जुड़वाओ तो कुछ मांगा गया होगा। फटे हुए सिर को लेकर डॉक्टर के पास गए होंगे, तो उसने लिखा ऑल इंजरीज आर सिंपल इन नेचर कॉज्ड बाय हार्ट एंड ब्लड ऑब्जेक्ट। डॉक्टर साहब मजा नहीं आया, इसमें तो रेस्टिंग दिन होगी, तो कहता तो कुछ जोड़ डाल, तो कुछ करता हूँ कि अरे 6-10 हो गए, मेरा जहाज छूट जाएगा। तो फिर वो कहता, फिर जोड़ डालने के बाद इंजरी नंबर 4 इज साफ इज ऑब्जेक्ट, तो 324 बन जाती होगी। बात देखो, वो मैंने बेकार पढ़ाई है, मुझे अच्छा लग रहा था जो मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन थोड़ा एक सेमिनार जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं चेक करके ये जरूर जाओ कि ये हमारी जिम्मेदारी 80 करोड़, जिस देश में 80 करोड़ 5 किलो गेहूं चावल दे रहे हैं, मुझे तो यहाँ लग रहा था कि आनी बेईमानी है। जिस देश में केवल 20,000 12,000 का सौदा लेने के लिए आपके पार्षदों के पास लोग आ रहे हैं। एलबी का पर्स जितने में आता है, इतने में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के लिए महिलाएं लाइन में लगी हुई, जिसमें 45 करोड़ लोगों ने बैंक ही नहीं देखी थी। सोचिएगा, तो डीबीटी का पैसा कहाँ जाता। माई की, दादी नानी की आंखों में मोतियाबिंद हो गया, वो लकड़ी, धुआं, पत्थर का कोयला, बुरादा वाली सिगड़ी, जाके अब सिलेंडर आया है। तो मुझे लगता है कि शहर का तो मामला ठीक है, लेकिन गांव का शहर से संबंध बहुत गहरा है। जिस साल हमारे खेतों में आलू अच्छे होते हैं, उसी साल आपके शहर से मोटरसाइकिल खरीदते हैं। जिस साल भाव ठीक होता है, उसी साल लड़की की शादी की जाती है। जिस साल फसल अच्छी होती है और भाव अच्छा होता है, कपड़े भी उसी साल खरीदे जाते हैं, जेवर भी। और सोचते हैं कि लड़की की शादी पीले हाथ भी उसी साल करें। अगर गांव समृद्ध नहीं होगा, पेइंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, तो शहर के कपड़ों में मक्खियां बैठ के सब खानों को खराब कर देंगी। इसलिए थोड़ा इंडिया के साथ साथ भारत की भी बात करें। दुर्भाग्य ये रहा है कि 70 साल भारत सरकार चुनता था और इंडिया सरकार चलाता था। पिछले 9 साल से भारत सरकार चुन रहा है, तो भारत की सरकार चला रहा है। इसके लिए कल्याणकारी योजना अब तो यार 6-10 हो गए, 11 हो गए, जाना ही होगा। हाँ, फिर न्यूज बनेगी कि मेरी वजह से हवाई जहाज रुका। तो और भी, तो मुझे लगता है कि वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर जरूर काम करिएगा। घर का पानी घर में, गांव का पानी गांव, मोहल्ले का पानी मोहल्ले में, खेत का पानी खेत में। रन ऑफ नहीं होना चाहिए, पानी रन ऑफ नहीं होना चाहिए। और राजस्थान को सुधर गया है कृषि की वजह से। इसके पहले हम राजस्थान बने, तो हमें जो है अपना कुछ सुधार कर लेना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बुलाया। और अगर
पानी 50% बीमारियां दूषित पानी से होती हैं। अगर सफाई और पानी पे बजट ठीक से खर्च कर दिया जाएगा तो रिकॉर्ड है, हेल्थ का बजट आधा हो जाएगा, सरकार पर बोझ नहीं पड़ेगा, एक लोग स्वस्थ भी रहेंगे और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं कि आने वाली लोकसभा के चुनाव में जो इस सदन में बैठे हैं वो बड़ी पंचायत में आए, ऐसी मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ। 2024 में आप लोकसभा में आपके से कुछ लोग मिले, ऐसी में, और मैं तो रिकॉर्ड बता सकता हूँ कि पार्षद लोग सांसद बनते हैं। मैं दूर की बात नहीं करता हूँ, आगरा में मेरी शुभकामनाएं हैं कि एक सदन तो आपने देख लिया, लेकिन देश की बड़ी पंचायत में आए और ये आपकी झाड़ू आपको यहाँ ला सकती है, आपकी सफाई आपको यहाँ ला सकती है, आपका पानी आपको यहाँ ला सकता है, आपका वैक्सीनेशन, आपको खुशबू है तो दिल्ली तक आएगी, जब दिल्ली तक खुशबू आ जाएगी तो चांदी की तस्तरी में रख के टिकट भी मेयर साहब की बढ़ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Request है, please felicitate Honorable Minister of State Law and Justice, Professor SP सिंह बघेल। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज अपना कीमती वक्त निकाल के वो हमारे बीच आए और इस इवेंट को ग्रेस किया और इस सेशन का पार्ट बने। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर से जोर से तालियां होनी चाहिए। तालियां बजती रहनी चाहिए। जयंत पाठक तालियों के साथ रखेंगे। माधवी रॉक टू फेलिसिटेट मिस सुलेना प्रकाश। Namit to please come forward and felicitate him. Namit to please come forward and felicitate him, Jankush, Professor AIILSG. Thank you to all our speakers. Thank you to Session Chair for curating such an insightful session on. I just forgot.